Hello students, today I bring for you new chapter sexual reproduction in flowering plants. From now, 12th class topic is started. The chapters are started. In this chapter, we will solve a total of 61 questions which are coming in the previous year exams from 2013 to 2023. So, without wasting any time, let's start the first question. Large colorful fragrant flowers with nectar are seen in. Large colorful fragrant flowers with nectars are seen in wind pollinated, insect pollinated, bird pollinated, bat pollinated. So here your answer will be option number B, insect pollinated. Explanation: large colorful fragrant flowers with nectar attract biotic pollinators such as insects, thus they are seen in insect pollinated plants. Insect pollinated plants are called entomophily. Wind pollinated plants are called anemophily. Bird pollinated plants are called ornithophily. And bat pollinated plants are called chiropterophily. ये था आपका एक्स्ट्रा डेटा एक्सप्लेनेशन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल इन द कॉर्न कॉब? टैसल का फंक्शन क्या होता है? जो कॉर्न के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसको टैसल कहते हैं. उसका मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन टू प्रोटेक्ट द सीड, गलत है पहला ऑप्शन. टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये भी गलत है. टू ट्रैप पोलन ग्रेन, सी वाला ऑप्शन सही है आपका. टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन गलत है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. टैसल्स इन द कॉर्न कॉब represents the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. So option C is the correct one. Third, in angiosperm, the haploid, diploid and triploid structure of a fertilized embryo sac sequentially are haploid, diploid, triploid structure of a fertilized embryo sac. Angiosperms में synergids, antipodals, polar nuclei, synergids, primary endosperm nucleus and zygote, antipodals, synergids, primary endosperm nucleus, and D is the synergid, zygote and primary endosperm nucleus. So here haploid is the synergid, zygote is the diploid and primary endosperm nucleus is a triploid organism. So option D आपका correct answer है. of a fertilized embryo sac. Explanation: synergids are the cells of gametophyte and hence they are haploid. Zygote formed by fusion of two gametes, thus it is a diploid in structure, and primary endosperm nucleus formed by the fusion of diploid secondary nucleus with a male gamete. Therefore, it is a triploid. So, option D is the answer. Next question, question number 4. Assertion region type questions है. Assertion: in gymnosperm, the pollen grain are released from the microsporangium and carried by air current. जिम्नोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से और एयर करंट से ट्रैवल करता है. ठीक है. रीजन: एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड. ये रीजन गलत हो गया यहाँ पर. तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर होगा. ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है. ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज. एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होगा, फ्लावर चेंज है यहाँ पर प्लांट एक ही है, बाइसेक्सुअल प्लांट है. ओके, तो उसको हमने क्या नाम दिया? तो पहला ही ऑप्शन है जिटनोगेमी इज द आंसर. Geitonogamy refers to the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower on the same plant. While this process involves pollination between different flowers because it occurs on the same plant, it does not increase genetic diversity. Geitonogamy. Okay. Next question number 6. In angiosperms, the correct sequence of events in the formation of female gametophyte in the ovule is.
3 successive free nuclear division functional megaspore, degeneration of 3 megaspore, mutated in megaspore mother cell, migration of 3 nuclei towards each pole, formation of wall resulting in a 7-celled embryo sac. तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या है फीमेल गेमेटोफाइट के फॉर्मेशन में ओव्यूल में? पहला सीक्वेंस क्या होगा ना? फर्स्ट इज द म्यूटिक डिवीजन ऑकर, ये वाला ऑप्शन सी, ये पहला है. ओके, फर्स्ट सीक्वेंस म्यूटिक डिवीजन ऑकर इन मेगास्पोर मदर सेल. सेकेंड विल बी द ऑप्शन नंबर बी, डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर. 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएगा और एक फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगा. नेक्स्ट इज 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स फंक्शनल मेगास्पोर. 3 बार न्यूक्लियर डिवाइड करेगा उसका, तो ये थर्ड स्टेज में आ गया. फोर्थ इज माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल. दिस वन इज द फोर्थ वन, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द ईच पोल and the formation of wall resulting the 7-celled embryo sac. This one is the fifth one. Okay, so CBADE कौन सा है ऑप्शन? CBADE, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है. ओके, एक्सप्लेनेशन. The process of female gametophyte formation in angiosperm also called megagametogenesis. ध्यान रखना, the process of female gametophyte formation in angiosperm also known as megagametogenesis. Okay, next question number 7. The residual persistent part which form the perisperm in the seed of beet is. Residual persistent part जो बीट के सीड में पाया जाता है पेरिस्पर्म, वो क्या है? सो हियर 7th में दिया इंटेगुमेंट, कैलिक्स, एंडोस्पर्म, न्यूसेलस. सो हियर the answer will be option D, nucellus. Okay, D is the answer. Explanation. Now mostly nucellus is consumed after fertilization due to absorption of food by developing embryo into seed. Sometimes the nucellus remains persistent in the seed and is called perisperm, which is found in the seed of the beetroot. Question number 8. In general, the egg apparatus of embryo sac in angiosperm consists of. The egg apparatus of embryo sac in angiosperm consists of. पहला 1 egg cell, 2 synergy, 2 antipodal cell, 2 polar nuclei. पहला गलत हो गया. 2 antipodal cell नहीं होते, 3 होते antipodal cells. ओके, फिर 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cells, 2 polar nuclei. बी ऑप्शन बिल्कुल सही. थर्ड 1 egg cell, 2 synergy, 2 antipodal cells, गलत. 1 egg cell, 3 synergids, 2 antipodal cells, 2 polar nuclei. So B is the answer. Okay, 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cell, 2 polar nuclei. इसलिए तो इसको कहा गया, क्या कहा गया? 7-celled 8 nucleate. 7-celled 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सेम 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, क्या दोनों सही है, देखते हैं. 9. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. करेक्ट वन. ऑटोगैमी शो करते हैं वो. स्टेटमेंट सेकंड. क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजेस आज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. बिल्कुल, क्रॉस पॉलिनेशन होता ही नहीं और ये उसका एक डिसएडवांटेजेस है क्योंकि वेरिएशन नहीं आता उसमें, है ना. तो ये भी करेक्ट है. तो यहां पर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन. ऑप्शन ए इज द आंसर. क्लियर है? एक्सप्लेनेशन की तरफ बात करेंगे. तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल. इन सच फ्लावर्स ऑटोगेमी ऑकर. लैक ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज ए डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन. तो क्या है? देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें से. पॉलिनेशन ऑफ बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. बिल्कुल, वाटर के थ्रू फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेट होना बहुत ही रेयर है.
Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. विंड के थ्रू एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड में ही सबसे ज़्यादा होता है, मोर कॉमन. थर्ड, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड. बिल्कुल सही. फ्लाइज एंड बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर से फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस होता है, फाउल स्मेल प्रोड्यूस होता है. मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट. ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका, इनकरेक्ट पूछा ना, तो डी स्टेटमेंट आपका हो गया आंसर. डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? इंसेक्ट में से बायोटिक एजेंट्स में डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होगा ना आपका? होगा यहां पर आंसर क्या? बीज. ओके, बीज आर द dominant biotic pollinating agents among insect even animals also. Next, question number 11. A typical angiosperm embryo sac at maturity is, ये मैंने अभी जस्ट कहा था, डिस्कस किया था ना, 7 celled 8 nucleates. तो क्या यहाँ पर लिखा है ये? ऑप्शन नंबर डी देख सकते हो, 8 nucleates 7 celled. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. The term used for transfer of pollen grains from anther of one plant to stigma of different plants, which during pollination brings genetically different type of pollen grains to stigma. उसको क्या नाम दिया गया? जिक्नोगेमी, कैस्मोगेमी, क्लेस्टोगेमी, जेनोगेमी. तो here आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जेनोगेमी. ओके, दो डिफरेंट प्लांट है, दो डिफरेंट फ्लावर्स है, तो जेनोगेमी तो कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन. एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं. Xenogamy is the transfer of pollen grains from one plant's anther to another plant's stigma. It is the only kind of pollination that results in the stigma containing genetically diverse pollen grain. Cross pollination between the flowers of various plants is known as xenogamy. Because two genetically distinct parents are involved, it causes heterozygosity. हेटेरोजाइगोसिटी कॉज करता है कौन? जेनोगेमी. याद रखना इसे. जेनोगेमी इज जिक्नोगेमी इज ए सॉर्ट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन in which pollen from one flower's anther is transported to stigma of another flower from the same plant. And cosmogamy is a condition in which the anther and the stigma of bisexual flowers are visible. That is called cosmogamy. These blooms are capable of both self and cross pollination. Pollen is transferred from the anther to stigma of the same flower in autogamy, a sort of self pollination. Clistogamous flowers bloom do not open at all, and so seed set is not reliant on pollinators. 13. In some member of which of the following pair of family, pollen grains retain their viability for months after release. रिलीज होने के बाद एक लंबे टाइम तक पोलन ग्रेन्स एक्टिव रहते हैं, वायबिलिटी पावर रहती है उनके पास. ओके, सो किस मेंबर में होता है ये, किस फैमिली में? पोएसी लेगुमिनेसी, पोएसी सोलेनेसी, रोजेसी लेगुमिनेसी, पोएसी रोजेसी. सो हियर इट विल बी 13 का क्या होगा? ऑप्शन सी, Rosaceae legumineae. Okay. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of the release, and in some members of Rosaceae and Legumineae and Solanaceae, they maintain viability for months. So option C is the answer. 14. The plant part which consists of two generations, one with the other. Important है कि the plant parts which consist of two generations, one within the other is, क्या होगा? Pollen grain inside the anther. Yes, pollen grain जो होता है वो कैरी करता है दो जनरेशन को एक साथ. Germinated pollen grain with two male gametes, seed inside the fruit, embryo sac inside the ovule. So here your answer will be option number
सी। ओके, 1 and 4 पोलन ग्रेन जो कैरी कर रहा है एंथर के अंदर और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर बिकॉज बोथ कंसिस्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन, 2 generations. Okay, 15. In water hyacinth and water lily, pollution takes place by water hyacinth, water lily. दोनों में पोल्यूशन किसके थ्रू होता है? वाटर करंट ओनली गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों फ्लावर्स क्या हैं? पानी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर है पानी की सरफेस से, तो पानी के थ्रू तो पोल्यूशन नहीं होने वाला। विंड एंड वाटर, विंड के थ्रू हो सकता है पर वाटर के थ्रू नहीं होगा। इंसेक्ट एंड वाटर, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, वाटर नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका सही है। एक्सप्लेनेशन, water hyacinth and water lily are aquatic plants with flowers that rise above the water surface. As with most land plants, they are polluted by insect or wind. Next question number 16. The body of the ovule is fused within the funicle at. The body of the ovule is fused within the funicle at. Micropyle, nucellus, chalaja, hilum. किस जगह पर फ्यूज हुआ है ये? माइक्रोपाइल तो नहीं होगा, न्यूसेलस भी नहीं, चालाजा लैंड में भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हिलम आपका सही आंसर है। हिलम हाइलम और एक ही बात है। हाइलम इज कनेक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल बॉडी। 17. Which the following is incorrect for wind pollinated plants? इनकरेक्ट बतानी है। ओके, wind pollinated plants. Many ovule in each ovary. Flower are small and not brightly colored. Pollen grains are light and non-sticky. Well exposed stamen and stigma. तो यहाँ पर stamen stigma well exposed होना चाहिए क्योंकि wind के थ्रू pollution हो रहा है। पोलन ग्रेन्स लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, बिल्कुल सही, सी भी है। फ्लावर आर स्मॉल नॉट ब्राइटली कलर्ड, ब्राइट कलर किसको चाहिए था? इंसेक्ट को चाहिए था, विंड के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फ्लावर का ब्राइट होना। मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए आपका। एक्सप्लेनेशन, पोलन ग्रेन्स मस्ट बी लाइट एंड नॉन स्टिकी इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट ड्यूरिंग wind pollination. They frequently have exposed stamen and a large feathery stigma to trap pollen grains in air. Wind pollinated flowers typically have single ovule in each ovary and dense inflorescence of flowers. So that this is your explanation. Now question number 18. 2020 कोविड के टाइम पे एग्जाम जो हुआ था नेट का, उसी में ये पूछा गया था। 18. In some plant, thalamus contributes to fruit formation. Such fruits are termed as. थैलामस से फ्रूट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसको हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फॉल्स फ्रूट। ओवरी से प्रोड्यूस होगा तो ट्रू फ्रूट कहा गया। अगर ओवरी की बजाय किसी और जगह से प्रोड्यूस हो रहा है फ्रूट तो उसको हमने नाम दिया फॉल्स फ्रूट। एक्सप्लेनेशन, फॉल्स फ्रूट आर द फ्रूट इन विच द थैलामस part of the flower also contribute the fruit formation. These fruits are not formed only from ovary. सिर्फ ये ओवरी से प्रोड्यूस नहीं होते, यहाँ पर थैलामस भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है इसमें। सो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा ये। नेक्स्ट 2019 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19. Which one of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? Post fertilization development in flowering plant. ओके, देखो, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, बिल्कुल ये करेक्ट है, ओवरी फ्रूट बनता है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ऑब्वियसली करेक्ट वन। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये गलत हो गया, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड ना कि एम्ब्रियो सैक। सो डी आपका आंसर होगा। ओके, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, जाइगोट एम्ब्रियो में, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म में डेवलप हो।
Question number 20. Persistent nucellus in the seed is known as. Persistent nucellus in the seed is known as Chalaza perisperm hilum tegmen. Here answer will be option B, perisperm. Perisperm is the name of the nucellus that remains after fertilization. Seeds of the black pepper and beet, for example. Okay, black pepper and beet are the example of the perisperm, because nucellus is persistent in the seed only. 21. What is the fate of the male gamete discharged into the synergid? सिनर्जिड में मेल गामेट डिस्चार्ज होने के बाद उसके साथ क्या होता है? ऑप्शन ए, वन फ्यूज विद द एग सेल, एग और द डिजेनरेट इन द सिनर्जिड्स, गलत हो गया. ऑल फ्यूज विद द एग, दोनों एक के साथ फ्यूज नहीं होंगी. वन फ्यूज विद द एग, अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस, गलत. वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, बिल्कुल सही. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Explanation: one of the two male gamete released in the synergids in the flowering plant fuse with the egg, while the other unites with the secondary or definite nucleus located in the central cell. Zygote equal to egg, जो कि haploid है, प्लस फर्स्ट मेल गामेट, ये भी haploid है, बन गया मिलके डिप्लॉयड. उसके बाद एक और क्या आता है आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होता है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस सेकेंड मेल गामेट. सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है आपका, ये डिप्लॉयड होता है, एंड सेकेंड मेल गामेट हैप्लॉयड होता है, और ये बन गए ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following has proved helpful in the preserving pollen as fossils? Proved helpful for preserving pollen as fossils. Pollen kit नहीं, cellulosic enzyme नहीं, oil content नहीं, sporopollenin that is found in the exine layer of the pollen grain. Exine is made up of sporopollenin. Explanation: sporopollenin is a prominent component of pollen grain. Strong outer walls. It is a chemical stability that allow it to survive in soil and sediments. So D option is the correct one. 23. Pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of, कितना होगा टेम्परेचर, -120, -80, -196, -160 डिग्री. So answer will be option C, -196 degree. Explanation: because liquid nitrogen has a very low boiling point of -196 degrees Celsius, it is commonly employed to preserve pollen grains. 24. Double fertilization is पहला, fusion of two male gamete of a pollen tube with two different egg, गलत हो गया. Fusion of one male gamete with two polar nuclei, ये भी गलत. That is called triple fusion. One male gamete with two polar nuclei is called triple fusion. Third, fusion of two male gamete with one egg, गलत, दोनों एक के साथ फ्यूज नहीं होंगे. डी, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, बिल्कुल सही आंसर. सिंगेमी किसको कहेंगे ना, जो पहला मेल गामेट था वो जो एक के साथ फ्यूज होगा और फिर जाइगोट फॉर्म होगा, उसको हमने कहा सिंगेमी. ट्रिपल फ्यूजन किसको कहा, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन बी वाला, फ्यूजन ऑफ वन मेल गामेट विथ two polar nuclei is called triple fusion, and syngamy plus triple fusion are called double fertilization. 25. Functional megaspore in an angiosperm develops into. Functional megaspore in an angiosperm develops into. किसमें डेवलप होगा ये, ओव्यूल, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो. So 25 will be option number C, embryo sac. Functional megaspore in angiosperm develops into embryo sac. Explanation: one of the megaspore of angiosperm is functional, while other three degenerate. Only the female gametophyte grows
from the functioning megaspore, that is called embryo sac. 26 question number. A dioecious flowering plant prevents both. Dioecious मतलब कि किस तरह का फ्लावर होगा वो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. डायोसियस का टर्म किसके लिए यूज की जाती है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज की जाती है. ओके. ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ. किस किस चीज को प्रिवेंट करेगा ये? सो हियर सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करेगा. सिंपल सी बात है. तो क्या होगा आंसर 26 का? ऑप्शन नंबर बी, ऑटोगेमी एंड जिप्नोगेमी. ओके. Explanation. Pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower in autogamy. Pollen grains are transferred from the anther to the stigma of another flower on the same plant is called gypnogamy. It's cross pollination with a pollinating agent in term of function. However, because the pollen grains come from the same plant, it's generally identical to autogamy. So B is the answer. 27. Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by. सिंगल ओव्यूल होगा ओवरी में और पैक होंगे पूरा इन्फ्लोरेसेंस से, तो वो किस तरह से मोस्टली पॉलिनेट होते हैं? तो 27 वाटर बी, विंड बैट. आंसर विल बी wind, option C. Okay. Wind pollinated flowers have a single ovule in each ovary and dense cluster of flowers. 28. Attracts and rewards are required for. Attracts and rewards are required for. किसके लिए ये रिक्वायर्ड है? देखो यहाँ पर दिया गया है. देखो एनिमोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लेस्टोगेमी. एनिमोफिली किसको कहते हैं? कहा था मैंने अभी. एनिमोफिली मीन्स wind pollinating plants are called anemophily, or wind pollinated plants are called anemophily. Entomophily, that the insect pollinated plants are called entomophily. Hydrophily, water pollinated plants are called hydrophily. Or cleistogamy is other one. So here attracts and rewards are required for. किसके लिए required होते हैं rewards? Pollination by insect, that is option B, entomophily. Mostly B is more widespread. Large, colorful, aromatic and nectar-rich flowers pollinated by insect. The flowers rewarded for pollination are nectar and pollen grain. Nectar and pollen grain. Pollinated by flies and beetles, the flower grow inflorescences to make themselves noticeable. Pollen grains are often sticky. तो अगर एंटोमोफिली इंसेक्ट को पोलिनेशन करना है तो पोलन ग्रेन को स्टिकी होना पड़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29. 2017 का ये क्वेश्चन है. देखो, द hollow foliar structure in a wheat embryo that encloses the shoot apex and few leaf primordia is called. Hollow foliar structure in a wheat embryo that encloses the shoot apex and a few leaf primordia is called coleoptile, coleopreja, epicotyle, hypocotyle. Here your answer is the option A, coleoptile. Okay, coleoptile is the answer. The leaf primordia is encased in the coleoptile, a hollow foliar structure that is a protective cell. So A is the answer. Question number 30. Choose the correct sequence representing the ploidy of nucellus, megaspore mother cell, megaspore, egg cell, zygote, polar nucleus of embryo sac, secondary nucleus and primary endosperm nucleus. इन सब की प्लोइडी आपको बतानी है. शुरू करेंगे न्यूसेलस से. ओके, न्यूसेलस क्या होगा? न्यूसेलस का प्लोइडी न्यूसेलस आर haploid, megaspore mother cell, सॉरी यहां पर न्यूसेलस क्या होगा? न्यूसेलस इज डिप्लॉयड and megaspore mother cell also diploid. Megaspore is haploid, egg cell haploid, zygote diploid, a polar nucleus of embryo sac,
क्या होगा? डिप्लॉयड एंड a polar nucleus of embryo sac is haploid, secondary nucleus diploid, and primary endosperm nucleus triploid. So your answer will be option number C. फिर से nucellus diploid, megaspore mother cell diploid, megaspore haploid, egg cell haploid, zygote diploid, a polar nucleus of embryo sac haploid, secondary nucleus diploid, and primary endosperm nucleus triploid. Question number 31. Continued cell pollination result in, बार बार सेल्फिंग ही होता रहेगा, सेल पोलिनेशन ही होता रहेगा, तो किसको रिजल्ट करेगा वो? जेनेटिक ड्रिफ्ट, हेटेरोसिस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, पॉलीएम्ब्रियोनी. So C is the answer. Inbreeding depression. Explanation: continuous mating of closely related individuals within the same breed causes inbreeding depression, which reduces an organism's fertility and productivity. So option D is the answer. Sorry, C is the answer. Option C आपका आंसर. Okay, inbreeding depression. 32. Pollen grain can be stored for years in liquid nitrogen, maintained at temperature. फिर से आया क्वेश्चन ये -196 डिग्री सेल्सियस. 33. The ovule of an angiosperm is technically equivalent to, ovule of an angiosperm is technically equivalent to megaspore mother cell, megaspore, megasporangium, megasporophyll. So here your answer will be option number C, megasporangium. Explanation: megasporangia or megasporangium, also known as ovule, arises from the placenta. Question number 34. Pollination in water hyacinth and water lily is brought by the agency of, ये भी क्वेश्चन पूछ पहले आ गया था. D, insect or wind. Option D. 35. In majority of angiosperms, reduction division occur in megaspore mother cell. Okay, बिल्कुल सही है ये. A small central cell is present in the embryo sac. गलत. Egg has a filiform apparatus. गलत. There are numerous antipodal cells. गलत. So A will be the answer. Explanation: the megaspore mother cell in the majority of angiosperm undergoes reductional division. Megasporogenesis is the process of producing megaspore from a megaspore mother cell. Meiotic division occurs in the megaspore mother cell. The process of meiosis produces 4 megaspores. So option A is the answer. 36. Which of the following statement is not correct? Incorrect बतानी है कौन सा statement आपका? Pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grow into the style. गलत. जितने पोलन ग्रेन गिरेंगे उतना पोलन ट्यूब बनाएंगे. अगर बहुत सारे स्पेसिस का पोलन ग्रेन्स गिरा हुआ है, ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पेसिस ग्रो इनटू द स्टाइल, है ना, तो ये गलत हो गया ना. पोलन ट्यूब तो बना लेंगे. बी, insects that consume pollen or nectar without bringing about pollinations are called pollen or nectar robbers. बिल्कुल सही. पोलिनेशन लेके नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो पोलन और नेक्टर को लेके चले जाएंगे, तो उनको हमने नाम दिया पोलन नेक्टर रबर्स. C, pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil. बिल्कुल सही. Some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species. बिल्कुल. रेप्टाइल्स में कौन आएगा? गीको लिजर्ड, है ना, ये भी कुछ पोलिनेशंस करा लेते हैं. सो हियर इनकरेक्ट वन इज द ऑप्शन ए. नॉट करेक्ट, रॉन्ग वन. Explanation: the pistil can tell if pollen is of the proper type or compatible or the wrong type, incompatible. The pistil receive pollen and support post pollination activity that leads to fertilization if it is the proper type. The pistil rejects the pollen by blocking pollen germination on the stigma or pollen tube growth in the style if the pollen is of the wrong type.
So A is the answer. 37. Seed formation without fertilization in the flowering plant involve the process of. सीड फॉर्म होगा पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसको हमने क्या नाम दिया? एपोमिक्सिस. ऑप्शन डी. फ्रूट फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी. ओके, so it's 37. Apomixis is a special process for producing seed without fertilization. Apomixis can be found in several Asteraceae and grass species. Even many species are there, like some grapes are also, which are used in the juice factory, juice industries. Seedless grapes, oranges are made by this process, apomixis. 38. कोटलीडन ऑफ मेज ग्रीन इज कॉल्ड. मेज ग्रीन का कोटलीडन को क्या कहते हैं? प्लूमुले, कोलियोप्रिजा, कोलियोप्टाइल, स्कूटेलम. तो सी डी इज द आंसर. स्कूटेलम कहा जाता है इसे. द कोटलीडन of grass family is known as scutellum and it is located on the one side of the embryonal axis. Now question number 39. Which one of the following statement is not true? Means wrong one. False. Tapetum helps in the dehiscence of anther. पहला गलत हो गया. Tapetum nourishment में हेल्प करता है, ना कि anther की dehiscence में. Exine of pollen grain is made up of sporopollenin. बिल्कुल सही. Pollen grain of many species causes several allergies. Okay. Stored pollen grain liquid nitrogen can be useful in the crop breeding programs. Correct one. Minus 196 degree Celsius. So A will be the wrong one. Tapetum helps in the nourishment of the pollen grain, while the dehiscence of anther is caused by endothecium. Endothecium. Okay, so this is the explanation. Next question number 40. Proximal end of the filament of stamen. Proximal क्या होता है? स्टामेन के लोअर पार्ट. वैसे स्टामेन के दो पार्ट है ना, तो यहां पर पूछा गया स्टामेन के दो पार्ट है. आंथर फिलामेंट, फिलामेंट लोअर पार्ट है और फिलामेंट की एंडिंग पार्ट को कहा गया प्रोक्सिमल एंड और आंथर की टॉप पोर्शन को कहा गया डिस्टल एंड. सो यहां पर ये कह रहा है प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टामेन इज अटैच्ड टू द. किस में अटैच होता है ये? सो योर आंसर विल बी आंथर, कनेक्टिव, प्लासेंटा, थैलामस और पेटल. सो डी विल बी द आंसर. थैलामस और पेटल में अटैच होता है वो. क्लियर? नेक्स्ट वन 41 क्वेश्चन. The coconut water from tender coconut represents. कोकोनट के अंदर जो कोकोनट का पानी होता है वो किस चीज को दिखाता है? एंडोकार्प, फ्लेसी मेजोकार्प, फ्री न्यूक्लियर प्री एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सो ऑप्शन डी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द आंसर. Explanation. The coconut water you familiar with is made up of free nuclear endosperm that is made up of thousands of nuclei. Where the white kernel around it is called cellular endosperm. जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है जिसको आप खाते हो, है ना, वो क्या होता है? दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द वाटर इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. 42. In bryophytes and pteridophytes, transport of male gametes required. ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में न्यूक्लियस मेल गैमेट्स की ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है मोस्टली? सो हियर विंड, इंसेक्ट, बर्ड्स. गलत. वाटर इज द करेक्ट वन. ऑप्शन डी वाटर. एक्सप्लेनेशन. मेल गैमेट्स मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom since they can live in soil but need water to reproduce sexually. The proliferation of the live pteridophytes is limited and restricted to certain geographical regions due to the need for water for fertilization. The ovule is a tiny structure linked to the placenta by a stalk called a funicle. So, this will be the answer, water. 43. The hilum is a scar on the. हाइलम कहाँ पर स्कार बन के प्रेजेंट होता है? फ्रूट वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट. नहीं, फ्रूट में नहीं होता.
सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, गलत। सीड वेयर फ्यूनिकल got attached to, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही है आपका। फ्रूट वेयर इट इज attached to the pedicel, गलत। सो सी ऑप्शन आपका आंसर है। In the hilum area, the ovule's body unties with the funicle. This is also present the seed of a mature ovule. 44. Which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy? पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो ऑटोगेमी के साथ जेनेटिकली सिमिलर है। ऑब्वियसली क्या कहेंगे उसे? जिटनोगेमी, है ना। जिटनोगेमी एक तरह का क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, और मेल फ्लावर का पोलन ग्रीन फीमेल फ्लावर के पोलन ग्रीन में फीमेल फ्लावर में ट्रैवल कर लेता है, और ये प्लांट सेम होता है। इसको हमने कहा जिटनोगेमी। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। 45. Which the following are important floral rewards to animal pollinator? फ्लोरल रिवर्ड्स क्या क्या है? फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, फ्रेग्रेंस के साथ थोड़ी होगा रिवर्ड में। प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सपीडेट, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, नेक्टर एंड द पोलन ग्रीन। D1, नेक्टर एंड पोलन ग्रीन इज द रिवर्ड। 46 क्वेश्चन नंबर, देखो। इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्दर डिवीजन, इन्वॉल्व meiosis, occur in ovule, occur in anther. So here 46 is the both microsporogenesis and megasporogenesis involves meiosis. Option number B. Okay, explanation. Microsporogenesis and megasporogenesis are the process for forming microspore and megaspore from the pollen mother cell and megaspore mother cell respectively during meiosis. Okay, so option B is the answer. Next question 2015 का है ये। The wheat grain has an embryo with one large sealed shaped cotyledon known as, the wheat grain has an embryo with one large seed shaped cotyledon is known as कोलियोरिजा स्कुटुलम कोलियोक्टाइल एपिब्लास्ट। क्या कहलाएगा ये? ये कहलाएगा आपका स्कुटुलम। ओके, स्कुटुलम कहलाएगा। द मोनोकोट एम्ब्रियो हैज ओनली वन कोटिलिडन, द स्कुटुलम व्हिच शेप लाइक ए सीड। 48. फिलिफॉर्म apparatus is characteristic feature of nucellar embryo, aileron cell, synergids, generative cell. Here the answer will be फिलिफॉर्म apparatus किसके पार्ट होते हैं, फीचर किसके होते हैं? ऑप्शन सी, synergids. ओके, सी इज द आंसर। Synergids feature filiform apparatus which are specific cellular thickening at the micropyle tip and help to guide the pollen tube. Next question, question number 49. Which of the following fruit is parthenocarpic? Apple, jackfruit, banana, brinjal. Parthenocarpic fruit means fertilization does not occur and fruit formation. So here parthenocarpic fruit is a banana. Option C. Apple and jackfruit are the false fruit because they involve ovary as well as thalamus. Brinjal is a true fruit, only developed from ovary, and banana is a parthenocarpic fruit. 50. Coconut water from the tender coconut is, ये भी सॉल्व किया था हमने, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 51. Male gametophyte in angiosperm produces, male gametophyte in angiosperm produces single sperm and vegetative cell, single sperm and two vegetative cell, 3 sperm and 2 sperm and a vegetative cell. So 51 answer will be option number D, 2 sperm and a vegetative cell. Okay, ये 51 का आंसर है। नेक्स्ट 52. Non-albuminous seed is produced in, non-albuminous seed is produced in 52. It is found in the
Options are P, maize, castor, wheat. So it is found in the option A, P. Or other examples are bean, groundnut. Okay, non-albuminous seeds are produced. 53. Pollen tablet are available in the market for. मार्केट में जो पोलन टैबलेट है, एक्सटेंसिव कंजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंटिंग फूड बिल्कुल सही। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, सप्लीमेंटिंग फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट 54. Male gametophyte with least number of cells is present in. Male gametophyte with least number of cells are present in Pinus, Pteris, Funaria, Lilium. Pinus नहीं होगा, Pteris नहीं होगा, Funaria भी नहीं होगा, Lilium आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, Lilium pollen grains have only 2 cells and angiosperm. That's why least number of cells are present in the male gametophyte. 55. Function of Filma apparatus is to. क्या काम होता है फंक्शन फिल्मा apparatus का? Guide the entry of pollen tube, recognize the suitable pollen stigma, stimulate division of genitive cell, produce nectar. ऑप्शन नंबर 1 मेन काम है और एक ही काम है गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट 56. Geitonogamy involves fertilization of a flower by pollen from a flower of another plant belonging to a distant population. Fertilization of a flower by pollen from another plant of same plant, another flower of same plant. Fertilization of flower by pollen from the same flower. Fertilization of flower by the pollen from a flower of another plant in the same population. So here geitonogamy means option number B, fertilization of a flower by pollen from another flower of the same plant. Okay, B is the answer. 57. Which one of the following statement is correct one? करेक्ट वाला बतानी है। टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, बिल्कुल सही। टैपेटम का काम नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, रॉन्ग वन, एक्साइन कहलाता है ये। स्पोरेंजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, गलत, स्पोरेंजिनस टिश्यूज आर डिप्लॉइड। एंडोथेसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, गलत। एंडोथेसियम आंसर की डेहिसेंस में हेल्प करता है, सो ए विल बी द आंसर 57 का। नेक्स्ट इज 58. एडवांटेजेस ऑफ क्लेस्टोगेमी इज। क्लेस्टोगेमी का एडवांटेज, क्लेस्टोगेमी मीन्स क्लोज्ड फ्लावर का एडवांटेजेस क्या है? विविपारी, गलत। हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बिल्कुल ही गलत। मोर विगरस ऑफस्प्रिंग, गलत। नो डिपेंडेंट ऑन पोलिनेटर, पोलिनेटर का रिक्वायरमेंट ही नहीं करता ही, क्योंकि फ्लावर तो क्लोज है ना, तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिनेटर। 59. Megasporangium is equivalent to. Megasporangium is equivalent to ovule, embryo sac, fruit, nucellus. Answer will be ovule. Okay. Megasporangium is equivalent to ovule. Question number 60. Perisperm different from endosperm in. Perisperm different from endosperm in. Its formation by fusion of secondary nucleus with several sperms, being a haploid tissue, having no reserve food, being a diploid tissue. So here the answer will be option D, being a diploid tissue. Explanation: perisperm is diploid while the endosperm is a diploid in nature. Last question is chapter का 61. Product of sexual reproduction generally generates. Products of sexual reproduction generally generates large biomass, longer viability of seeds, prolonged dormancy, new genetic combination leading to variation. तो क्या होगा 61 का आंसर? ऑप्शन नंबर डी, न्यू जनरेशन कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। और इसके साथ कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आपका। 12th का पहला चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, और हमने को 61 क्वेश्चंस के जो प्रीवियसली
पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।